accordingly notify to them. Your voice is not clear. Can you say again? मैम आप स्टेटस अपडेट कर दीजिएगा ग्रुप में जो भी नहीं, अटेंडेंस स्टेटस में ऐसे रोज अपडेट नहीं कर सकती हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ, जिसके 90% आ जाते हैं ना, जैसे 92 में आ जाता है, देन उसमें मैं फोन करती हूँ कि तुम 92 में आ गए हो। कि रोज अपडेट करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, लेकिन 92 में जब आता है तो आई जस्ट कॉल हिम। तो प्लीज आप अपना अटेंडेंस का ध्यान रखो। हाँ, Like अभी तो आप अटेंडेंस ले रहे हो मैम, जब नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होगी that time what we are not switching on the camera, we are on the like on the audio. नेक्स्ट पीरियड के लिए कैमरा नहीं चाहिए, केवल फर्स्ट पीरियड अभी कैमरा चाहिए, उसके बाद कैमरा नहीं चाहिए लास्ट पीरियड तक भी। Okay, okay. नेम चाहिए, हाँ, कैमरा नहीं चाहिए। उसके बाद मुझे फर्स्ट पीरियड में कैमरा चाहिए, उसके बाद ये लास्ट पीरियड तक कोई कैमरा नहीं चाहिए, केवल नेम चाहिए, वो मैं ले लेती हूँ। अगर किसी बच्चे के नहीं हो रहा है, कुछ परेशानी है, तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है। बेशक अगर उसे प्रॉब्लम है, ग्रुप में नहीं कर पा रहा है, तो मुझे वैसे कर सकता है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे फ्रेंडली बात करिए, कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई ज्वेलरी प्रॉब्लम है तो मुझसे बात करे, छुट्टी ले रहा है तो बात करे, तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन कोई लगातार ऐसी कभी सेकंड में गायब है, कभी फिफ्थ में गायब है, कभी ऐसा, तो उसके लिए दिक्कत होती है। ये लास्ट 3 बैचेस से हमारे बैच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको सर्टिफिकेट इशू हुए हैं। लेकिन उससे पहले के 3 बैचेस में बच्चों को सर्टिफिकेट नहीं हुए, इशू नहीं हुए, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। अब वो डीजी से डायरेक्ट लिंक होता है सर्टिफिकेट का, वहां से इशू होता है, वो जनरेट नहीं होता है फिर। तो हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत हमारे हाथ में होता है, उससे ज्यादा नहीं। मैडम वन मोर क्वेश्चन, वन बाय वन। हाँ, बोलो एक बोलो। अटेंडेंस का कोई रिकॉर्ड हमारे को, मतलब लाइक इन एवरी 15 डेज हम लोग को अपडेट मिल जाए या मंथली कुछ मिल जाए कि कितना हो गया है, मालूम तो होना चाहिए। ऐसे एकदम से 92 पे आके मिलेगा तो पता भी नहीं चलेगा। 6 डेज के या 7 13 उसका होता है ना वीक का, मैं आफ्टर 6 डेज बता दूंगी, ठीक है। वैसे मैंने आज तक किसी भी बैच में बताया नहीं है, लेकिन तुम इतने क्यूरियस हो तो मैं बता दूंगी आफ्टर 6 वीक। तो मैम लास्ट वीक का बता दीजिए। अभी तो कुछ नहीं, सब ठीक है, बढ़िया चल रहा है। मैडम वन मोर क्वेश्चन है, लास्ट वीक का प्रॉब्लम है, लंच में लॉग आउट लास्ट वीक का तो है, क्योंकि कुछ बच्चों ने ज्वाइन ही लेट किया है ना। जैसे आकाश श्रीवास्तव, ये फर्स्ट दिन 16 को ही आया ही नहीं, जो 4 में इनका एब्सेंट है। आशीष कुमार तिवारी, ये भी नहीं आए फर्स्ट दिन। सेकंड दिन ये से 2 एब्सेंट थे। फिर 20th को ये फर्स्ट पीरियड में नहीं आए। ब्रिजेश कुमार फर्स्ट दिन नहीं आए थे। फिर घनश्याम जी फर्स्ट, फिर मंडे नहीं आए, ट्यूसडे नहीं आए, वेडनेसडे नहीं आए। उसके बाद जवाहरलाल, ये वेडनेसडे को फर्स्ट और सेकंड पीरियड में नहीं आए। फिर उसके बाद 20th को लास्ट की 2 पीरियड मिस करे हैं। उसके बाद हो गया खुशहाल कुमार, वेडनेसडे को लास्ट के 2 पीरियड नहीं आए। फिर पवन भारद्वाज फर्स्ट दिन नहीं आए और फ्राइडे को नहीं आए। एंड रजनीश कुमार ठाकुर फर्स्ट दिन नहीं आए। एंड सचिन शर्मा फर्स्ट दिन नहीं आए। उसके बाद सौरभ कुमार पाठक वेडनेसडे को लास्ट के 2 पीरियड मिस करे, बाकी सब के प्रेजेंट है। मैम सचिन शर्मा मैम, मैं लास्ट फर्स्ट डे आया था मैम, ज्वाइन लास्ट के 1 पीरियड पूरा ज्वाइन किए हुए, लास्ट के 2 पीरियड। लास्ट के 2 पीरियड सेम हियर विद मी मैम। पवन भारद्वाज आल्सो फर्स्ट डे वी जॉइंड द क्लास बट इट गॉट लेट मैम। हम लोग को ग्रुप का लिंक ही नहीं आया था। वन बाय वन सचिन शर्मा बोलो पहले। मैम मैं फर्स्ट डे स्टार्टिंग से ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था बट ज्वाइन नहीं हो पा रहा था। फिर लास्ट के 2 पीरियड मैंने ज्वाइन किए थे और मैंने सेम चीज अपडेट भी किया था व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं डीजी उस रिकॉर्ड में देखती हूँ, अगर तुम्हारा प्रेजेंट दिखा रहा है तो मैं उसको पीपी कर दूंगी। और दूसरा बोलो कौन है? मैम पवन भारद्वाज। पवन हाँ, पवन भारद्वाज बोलो। मेरी बात कर। मैम फर्स्ट डे हम लोग ज्वाइन करना चाह रहे थे, ग्रुप में हम लोगों ने मैसेज भी किया था बट वो लिंक ही नहीं आया था, तो हम लोग इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए। और लास्ट में लेकिन हम लोग ज्वाइन कर लेते लास्ट क्लास में। लास्ट के दो पीरियड में ज्वाइन कर लिए थे। हाँ जी ठीक है, ओके, मैं देख लेती हूँ आपका। और किसका? मैम आकाश श्रीवास्तव।
फर्स्ट डे हम लोग आकाश बस आपका भी सेम था? यस मैम, फर्स्ट डे हम लोग फीस पेमेंट करने के बाद हम लोग वेट कर रहे थे, ग्रुप में मैसेज भी किया हम लोगों ने, मगर कोई लिंक आ ही नहीं रहा था। कैप्टन ठीक है। भाभा से कॉन्टेक्ट किया था हम लोग को। ठीक है, मैं चेक कर लेती हूँ। और बताओ कौन है? मैम कौशल कुमार। कौन कौन कौन? मैम जवाहरलाल। जवाहर। यस सर मैम, जवाहर तो ठीक है ना, जवाहर का थोड़ा कुछ है। जवाहर तो बोला था जवाहरलाल। जवाहर का देखो, जवाहर का ये वेडनेसडे को फर्स्ट और सेकंड पीरियड। मैम मैं प्रेजेंट था, क्लास में भी आया था। ऐसा हो नहीं सकता बच्चे, ये इसमें ऐसे नहीं लगा, ये आप नहीं थे इससे ये एब्सेंट लगी है। मैम कौशल कुमार। मैम मैं सारे पीरियड्स अटेंड किए थे। ये पॉसिबल नहीं है कि फर्स्ट डे का मैं मानती हूँ, लेकिन वेडनेसडे का मैं नहीं मान सकती, क्योंकि उसमें सब आ जाते हैं। फिर वेडनेसडे का मैं नहीं मान सकती, फर्स्ट डे का मान सकती हूँ। मैम स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। ओके, लेकिन मैंने सारी अटेंडेंस क्लासेस अटेंड की थी, मेरे पास ऑलरेडी सारे। कहने से मैं देख लेती हूँ, लेकिन फर्स्ट और दिनों में प्रॉब्लम नहीं आती है, केवल फर्स्ट डे में प्रॉब्लम आती है। और बताओ किसका है? मैम कौशल कुमार। कौशिक। कौशल कुमार। मैम वेडनेसडे को मैंने सारी क्लासेस लगाई हैं। आप बोल रहे हो वेडनेसडे को मेरी क्लास तो क्लासेस नहीं। वेडनेसडे लास्ट पीरियड मैंने मैम सारी क्लासेस लगाई अभी तक। मैं देख लेती हूँ तुम्हारा भी, और मैं जौहर का भी देख लेती हूँ। या तो लेट ज्वाइन करे। मैंने अभी तक मैम एक भी क्लास मिस नहीं की है मेरा। और बताओ, एक बार आप चेक कर ले मैम। ठीक है मैं कर लेती हूँ। और बताओ मैम रजनीश ठाकुर। रजनीश ठाकुर फर्स्ट दिन आपने कब ज्वाइन किया था? मैम फर्स्ट डे मैंने ना अराउंड 9:30 को ज्वाइन किया था, तो मैंने आई थिंक उस दिन गुप्ता सर या क्लास रूम की तो पूछा था, मैंने बोला कि अटेंडेंस ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो जाती है। पहले लिंक नहीं आया था, लिंक थोड़ा लेट आया था मुझे, तो आई ज्वाइन अराउंड 9:30 to 9:40। अच्छा ठीक है, ओके चेक कर लेती हूँ। और बताओ। हाँ मैम। और क्या? अमित कुमार। हाँ अमित कुमार तुम्हारा तो ठीक है। और बताओ। मैम करण सानी, प्लीज कंफर्म सभी में प्रेजेंट। किसका? करण सानी। करण का सानी का सब सही है, बाकी सबका सही है। मैं इन लोगों का दोबारा चेक करके कर देती हूँ, लेकिन आगे से प्लीज ध्यान रखना ये टैली। साहिल का चेक करना एक बारी। हाँ साहिल मैंने नाम बताए तो थे, उसके अलावा सब ठीक है। साहिल ठीक है। मैं ये डीजी से मतलब लिंक होता है इसका, हमें रोज डीजी में अटेंडेंस भेजनी पड़ती है। उसके बाद वो लिंक अटैच होता है उसके साथ, सर्टिफिकेट के साथ, तभी सर्टिफिकेट निकलेगा जबकि आपकी 90% होगी। तो प्लीज हर पीरियड का ध्यान रखें। कितने बजे तक ऑनलाइन है फर्स्ट क्लास के लिए? कितने बजे तक? 9:05 तक आप हो जाओ ना, क्योंकि कैमरा जब तक ऑन होता है 8:55 पे आ जाओ, 9:05 तक मैं बोल देती हूँ कैमरा बंद कर दो। तो मैम नेक्स्ट क्लास का कैसे फिर आप अटेंडेंस लेते, तो हमें मालूम कब पड़ेगा कि आप अटेंडेंस ले रहे? सपोज कोई इंटरनेट चले गया, कुछ हो गया। देखो नेक्स्ट क्लास में सब जैसे 9:15 होती है, सपोज नहीं 10:15 होती है, ठीक है? तो मैं 5-10 मिनट देती हूँ बच्चों को, मैं 10 मिनट तक देती हूँ, उसके बाद अटेंडेंस ले लेती हूँ। तो उसमें रिफ्लेक्ट होते हैं नेम आप लोग। मैम आज मैं 9:05 को ऑनलाइन हुआ इंद्रप्रीत, तो एम हाँ, प्रेजेंट। तो मैंने कर दिया। मैं ज्यादा टाइम देती हूँ स्टूडेंट्स को, ऐसा मत सोचो कि मैं एकदम से फर्स्ट पीरियड के लिए, आज फर्स्ट पीरियड के लिए 9:05 को ऑनलाइन है। हाँ तो मैंने ओके, मैं प्रेजेंट दिखा आपका। ओके मैं 10 मिनट तक भी टाइम देती हूँ, ठीक है? मैम एक बार फिर से नाम बता दो मैम प्लीज। अब किसका नाम, क्या नाम है तुम्हारा? मैम संतोष कुमार रॉय। संतोष कुमार ठीक है, मैंने बताया तो थे नाम, बाकी सब ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम एक और डाउट है। हाँ मैम ये कितने दिन की छुट्टी ले सकते हैं टोटल अलाउड 90% के लिए? 90%, 100%, 9-10 दिन की ले सकते हैं। अच्छा, जो सैटरडे संडे छोड़ के 9-10 दिन की और ले सकते हैं। तो वही तो पता नहीं लगता है एक्चुअली ना, वो पीरियड से एक पीरियड में गायब हो जाएगा, फिर अगले दिन दूसरे पीरियड में गायब हो जाएगा, ऐसे बनते जाते हैं। तो इस तरीके से एक दिन की लीव हो जाती है, तो इस तरीके से 90% कब आ जाता है उसे पता नहीं लगता है। इसलिए कह रही हूँ मैं, इस चीज का ध्यान रखना।
मैम तो आप ना हमें वीकली बेसिस पे अपडेट कर देना, बिकॉज लाइक आज हमने पूरी क्लियर किया है। हमारे पास अटेंडेंस के अलावा हमारे पास बहुत काम होते हैं। एक बैच तो ना सेकंड मिड भी है, फेज 2 भी है, और भी काम है। लाइक एक महीने बाद हमें पता चलेगा तो फिर हमें ही नहीं याद रहेगा कि क्लास अटेंड उस दिन करी थी कि नहीं करी थी। तो आप नहीं क्यों नहीं आप रोज अटेंड करिए, हम ऐसा कैसे नहीं पता लगेगा। अभी फर्स्ट डे की जैसे डाउट है ना, अभी जैसे मैंने सारी क्लासेस अटेंड किया, आप बोल रहे 2 दिन 2 बता दूंगी लीव है। क्या है, 6 वीक के बाद बता दूंगी अटेंडेंस क्या है। ठीक है, चलो। Good morning, ma'am. Just give me some presentation rights. Good morning, sir. Sir, good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning, ma'am. अच्छा बेटा, regarding your attendance, don't bother, don't worry. If you are careful about your attendance, there will not be any issues. आपको अगर कोई इशू जनरेट होने की टेंडेंसी आती है, यू आर एब्सेंट फॉर ए कपल ऑफ डेज कंटिन्यूसली, और योर अटेंडेंस इज गोइंग इन द रेड जोन, टुवर्ड्स द रेड जोन, तो सफिशिएंट टाइम में हम आपको उसका नोटिस दे देंगे। मैम विल कॉल यू अप, दैट्स नंबर 1। और दूसरी चीज़ बेटा, ये मत सोचना कि ये जो सिस्टम है इसको डॉज करके आप अपनी अटेंडेंस को अपग्रेड कर लोगे। मीन्स इफ़ यू आर नॉट अटेंडिंग द लेक्चर्स and then the attendance will be upgraded, that's also not possible. The system captures the attendance automatically also. So इसके logs जो हैं ये daily basis पे generate होके DGS को mail होते हैं every day. So don't worry about it. अगर किसी की भी attendance में कोई issue anticipated है, we will tell him in advance and he will have sufficient time to get it rectified. Okay. ओके, दूसरी चीज, हमारा जो कोर्स है दिस इज टोटल 360 आवर्स ड्यूरेशन। आपकी जो अटेंडेंस की रिक्वायरमेंट है दैट्स 90%, एंड द टोटल लीव विच यू आर अलाउड इज 36 आवर्स, दैट्स 10% ऑफ द टोटल कोर्स। 36 घंटे अगर दिनों में कन्वर्ट करें तो 6 दिन आते हैं बेटा। एवरी डे वी हैव 6 आवर्स ऑफ क्लासेस, सो दैट इज द लीव पीरियड विच इज अलाउड टू अस। ओके, and this being a online class, the attendance is basically whether you are logged in or not, right beta? So attendance can't be easier than this. Okay. Yes, sir. Okay, sir. Okay beta, all right. Okay. From my side also beta, today there's a bit of bad weather this side, so there could be a network issue in between. So if that happens and I'm disconnected, just remain calm and patient. Are you hearing me loud and clear as of now? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir, loud and clear. Okay, great. So अगर कोई network issue बीच में आता है, so just take a small break. I will try to reconnect, and if I anticipate के ज़्यादा बड़ी लंबी प्रॉब्लम होने वाली है, I'll send you a message on WhatsApp. Okay, so let's now move on to the topic which we were discussing. Last lecture में हमने position lines के बारे में discuss किया था. So one subtopic in position line was remaining, that is the celestial position lines. So we had done a couple of methods how position lines can be obtained. ये method हमारा रह गया था. So आज का जो हमारा plan है, we will discuss the celestial PLs first, and इसके बाद फिर जो next concept हम discuss करने वाले हैं, a very important concept in chart work. It's a basic concept and a very important concept which is used almost in 90% of the questions. That is the concept of current and wind. So ये हमारा आज का target है for the initial 2 lectures of navigation. Position lines by celestial observation, and then the effect of current and
wind. Current wind में दो types की application होती है. One is known as allowing for the current. Second is known as counteracting the current. So one by one we will try to understand कि current और wind को हम लोग कैसे consider करते हैं, कैसे apply करते हैं. How is the ship's progress affected because of these two? So before we move on, beta, any doubt or query in your mind right now? Okay, so that gives me the green signal to go ahead. Let's go into first the position lines by celestial observation. अब ये जो celestial observations हैं बेटा, इनको भी हम डिटेल में करेंगे. You have done them during your second mates, some of them during your pre-C also. So there are total 5 different methods with which celestial observations can be obtained or celestial position lines can be obtained. कौन-कौन से 5 मेथड हैं बेटा, याद है? long by cron, lat by meridian, x meridian, Intercept Panteleris method, and meridian at noon. meridian by latitude. सर सबसे पहले है सर लैट बाय मेरिडियन, फिर लॉन्ग बाय क्रॉन, सर फिर इंटरसेप्ट, फिर सर एक्स मेरिडियन और 5वां So Polaris. Very good, beta. These are the 5 methods which we have. The Polaris or the pole star. So you have Marpas or latitude by meridian altitude. You have longitude by chronometer. Then you have intercept. You have X meridian, and then you have Polaris or pole star observations. So let's discuss how do we plot these PLs by all these methods. As I told you, CellNav में हम इन methods को डिटेल में डिस्कस करेंगे. अभी के लिए for the chart work purpose हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इन पांचों मेथड में क्या इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइडेड होती है क्वेश्चन में, what information is given to us, and दूसरी चीज using that information how do we plot these PLs on the chart. So this is what is required for chart work for now. How these PLs are obtained, how the calculation is done, what are the formulas, how they are practically used on board, ये सारी की सारी चीजें हम लोग CellNav में when we discuss these methods in detail we will be doing them. So for now we have to just concentrate on how to plot the position lines obtained by these 5 different methods. So let's go to the video. Just give me a minute, I'll set up the video. So what you see on the screen now, this was the last position line which we discussed in our previous lecture. That is the position line by depth contour. This was a special PL because the name is position line, but it is not actually a straight line. It's a random curved line on the chart. So, but still it comes under PLs only, comes under position lines only. So this was the last what we did. Now we are continuing to celestial position line using these 5 different methods. Celestial PLs.
Celestial observations, when solved, provide a position through which to draw the PL and the direction of the PL. Is the audio and video loud and clear? Yes, sir, loud and clear. Very good. The position through which the PL is drawn depends on the method deployed for solving the celestial observation. The direction of the PL in every case of celestial position line is perpendicular to the azimuth of the celestial body. In case of latitude by meridian altitude, the azimuth can be either north or south. Thus, in case of latitude by meridian altitude, the direction of the PL, which is like any other case perpendicular to azimuth, is specifically east-west. Just give me 1 minute, beta. Okay, so as you see here, beta, these celestial observations basically provide us with this data. They give us a particular position through which we can draw the position line. It could be a latitude or longitude. So every method, whether it is Marpas or long by Cron or intercept or X meridian or Polaris, it gives us a position through which we can draw the position line. So we have that reference point jahan se position line pass karegi. The second thing what we require and what these methods give us is the direction of the position line. Once you know the direction in which the PL lies and you know the reference point from where it is passing, it is very much possible for us to plot or draw that position line on the chart. Now, in case of celestial observations, the direction of the position line in every case, any of these 5 methods, Marpas, long by Cron, intercept, X meridian or Polaris, the direction of the PL is always perpendicular to the azimuth of the celestial body. So azimuth is basically the direction in which the body is, and the PL is perpendicular to the azimuth of the body. So in case of Marpas, the azimuth is not given, but we know that Marpas observation is taken when the body is on our meridian. Meridians run north-south, so this tells us that the body is either north of us or it is south of us. So if the azimuth is north or south, the direction of the PL, which is perpendicular to the azimuth of the body, has to be east-west. So all clear up to here, beta? Yes, sir. Very good. Celestial PLs are represented on chart by single arrows at each of its ends. Now let's look at the various methods of solving the sides, and based on each method, the position through which to draw the PL. In latitude by meridian altitude cases, the position through which to draw the PL is observed latitude and DR longitude. Direction of the PL is perpendicular to azimuth, and in this case, specifically east-west. Okay, so if in any chart work question, they give you a PL by Marpas method or latitude by meridian altitude method, they will tell you what is the observed latitude. They will also tell you what is the DR longitude. You should know that the position line will pass from this particular position, that is observed lat and DR longitude. The direction, as we just now discussed, is always perpendicular to the azimuth. In this particular case, it will be east-west.
So this is the first method, latitude by meridian altitude or MARPAS. The second one is longitude by chronometer. Longitude by chronometer, position through which to draw the PL is dr lat, observed long, direction of the PL perpendicular to azimuth. X meridian. So in case of long by chron, they will provide us with a observed longitude. The latitude used is the dr latitude or the dead reckoning latitude. This is given to us, information is given to us in the question, and azimuth of the body is also given to us. Azimuth could be anything in this case. So whatever azimuth is given, the direction will be perpendicular to the azimuth of the body. So that's method number 2. The third method is X meridian method. Method, position through which to draw the PL, observed lat, dr long, and direction is perpendicular to azimuth. X meridian basically means that the body is close to the meridian of the observer or near the meridian of the observer. So in this question also, the X meridian question, if it is given to us in a chart work question, they will give us the observed latitude and they will give us the dr longitude. This will be provided to us. We should know that the PL has to pass from this particular position. The azimuth is, as always, perpendicular to the position line. So we have the information required to draw it. The next method we have here is Polaris or pole star method. Polaris or the pole star, observed lat, dr long, perpendicular to azimuth. So the information given in Polaris is similar to the information given in X meridian. So you are given a observed latitude, you will be given a dr longitude. This information will be provided in the question. The azimuth will also be provided in the question. So when this is given to us, we are able to plot this position. We are able to plot the azimuth, and perpendicular to it lies our PL. And lastly, intercept method. We draw it through a point called as ITP, intercept terminus point, and the direction is perpendicular to azimuth. So in case of intercept, the method by which we draw the PL is using the ITP. So in intercept, they basically give us the dr position, the azimuth, and they tell us the intercept, which could be some distance towards the body or away from the body. So towards the body means from the dr position we have to go in the direction or towards the celestial body for that particular distance, which is equal to the intercept, and whatever point is reached, that is our intercept terminus point or intercept terminal point. It is known by these two names. The short form is ITP. We will just see by a small diagram how do we plot this ITP on the chart when the intercept and the azimuth is given to us. We'll try and understand all this through 2-3 simple examples. DR position 51 degrees 34 minutes north, 008 degrees 02 minutes west. But before we proceed ahead, if you want, please take a screenshot of this. This gives you a summary of all the celestial position line, the reference point as well as the direction. So just take a screenshot and keep it saved in you. I would recommend बेटा, मैं बीच बीच में आपको कुछ एक screenshots लेने के लिए बोलता रहूँगा. I would recommend कि आप अपने कंप्यूटर में एक particular folder
by the name of phase 1 navigation बना लें, and उस folder में you can keep on saving these screenshots date wise. So normally date automatically capture हो जाती है screenshot में, so you will have them in a chronological order. Later on when you want to revise them, it will be very easy for you, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको स्क्रीनशॉट के लिए बोलता हूँ, these are important points, important informations which help you to understand the complete method. और दूसरी चीज़ बेटा, once you have taken this screenshot, I would recommend, have you made a separate notebook for navigation बेटा? Yes sir. Yes sir. वेरी गुड. अगर नहीं बनाई है तो बेटा एक सेपरेट नोटबुक आप नेविगेशन के लिए रखो. आई विल बी सेंडिंग यू सम असाइनमेंट्स एज आई टोल्ड यू बिफोर. सो ये सारी की सारी असाइनमेंट्स हम लोग उसी नोटबुक में करेंगे. एंड ये जितने भी स्क्रीनशॉट मैं लेने के लिए बोलता हूँ, आई वुड रिकमेंड दैट आफ्टर द क्लास इज़ ओवर एंड यू आर रिवाइजिंग दैट टॉपिक, तो आप इन स्क्रीनशॉट्स को अपनी उस नोटबुक में भी नोट डाउन करें. So just saving them on the device will not help you much. So note them down in your notebooks. So that will lead to the long-term memory. Okay. MMD situation में जब you are running against time, there is time pressure. Also there is passing percentage accuracy pressure. You have 70% passing marks required here. So that time when your brain kicks in, तो आपकी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वही आपकी हेल्प करती है. लेट मी गो अ लिटिल बिट ऑफ टॉपिक. बेटा, व्हेन यू पीपल बाय मोबाइल फोन्स, व्हाट इज द आइटम व्हिच यू गिव मोस्ट इम्पोर्टेंस टू? मेमोरी एंड रैम. मेमोरी. वेरी गुड. सो दो चीज़ें जिनके लिए सबसे ज़्यादा importance है मोबाइल फ़ोन में, that is memory and RAM. Memory basically tells you how much data you can have, and RAM basically gives you the computing power, how many windows you can open up. अब बेटा एक सॉफ्टवेयर भगवान ने यहाँ भी लगाया है, राइट? मोबाइल फ़ोन की मेमोरी और रैम तो अपग्रेड भी हो सकती है. यू गो ऑन वन कॉन्ट्रैक्ट, आफ्टर दैट यू कैन अपग्रेड योर मोबाइल फोन्स रैम एंड मेमोरी. ये जो रैम और मेमोरी है, कैन दिस बी अपग्रेडेड? नो सर. इसको अपग्रेड करना थोड़ा मुश्किल है. देयर आर वेज विद व्हिच यू कैन ट्वीक इट अ लिटिल बिट. या हाउ वी कैन डू इट ब्रिजेश? सर मेडिटेशन, कंसंट्रेशन, योगा. Yes, that's right. That's right. So little bit what you can do is with meditation, yoga, concentration exercises, little bit you can do it with the diet. Okay, you have good diet, badam khao, doodh piyo, so that will give you a little bit improvement in this RAM and ROM. But ज़्यादा इसको tweak नहीं किया जा सकता. Brijesh is very much right. एक चीज़ बेटा जो हम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको मुश्किल लगती है, एनी सब्जेक्ट और एनीथिंग इन योर लाइफ, आप कोई काम कर रहे हो, लेट्स से आप ब्रिज पे हो, अराइवल डिपार्चर आपको मुश्किल लगता है कि यार अराइवल में क्या क्या करना है, चेकलिस्ट फॉलो करनी है, व्हाट ऑल थिंग्स हैव टू बी चेक्ड अप, एवरी टाइम आई फॉरगेट समथिंग, या डिपार्चर के टाइम पे पोर्ट से डिपार्चर हो रहा है, स्टेशंस हैं, व्हाट ऑल थिंग्स टू बी डन, इट डजंट, वेरी डिफिकल्ट, माय माइंड लूजेस, मिसेस मैनी थिंग्स. सो ऐसी किसी भी चीज़ को जो आपको मुश्किल लगती है, उसे आसान बनाने का एक तरीका है हमारे पास. इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वट एवर रैम गॉड हैज़ पुट इन आवर ब्रेन्स, वो तरीका है प्रैक्टिस. किसी भी चीज़ को आप जितना प्रैक्टिस करोगे, the more you practice it in your mind, practically by hand, उतना ही वो चीज़ आपके लिए आसान होती जाएगी. So the whole purpose of taking screenshots of this in between portions, keeping them on your device, noting them down in your register is this only, कि ये चीज़ें आपके माइंड में एक बार रिवाइज हों, and whenever you open that notebook,
to revise the thing, they again get bombarded on your mind. The more and more you practice them, the easier it will be to do the questions using those concepts. So that's the whole purpose. So जो ये screenshots हैं, save them and note them down in good handwriting in your notebook. Prepare a good notebook. It will help you a lot before your exams. जब आपकी final revision चल रही होगी, उस time पे this notebook will be very handy. And don't worry, मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं देने वाला. There will be only important things in between which I will tell you to write. There will not be many screenshots which I will be giving you. So anyway, let's go back to the video for PLs. Through 2-3 simple examples. DR position 51 degrees 34 minutes north, 008 degrees 02 minutes west. Above DR position used for solving various celestial observations. Based on the results provided, we need to identify the method used for solving the observation and then accordingly draw the PL on the chart. The first case is star X observation gave observed long of 008 degrees 10 minutes west, azimuth 070 degrees true. Beta, can you tell me this number 1 example here, which method has been used? Long background. Long background. Very good, Beta. So the method used here is long by chron, because observed longitude हमें सिर्फ longitude by chronometer method में ही मिलता है. So let's see how it is plotted. In such cases where observed longitude is the result, such observations are solved by longitude by chronometer. In long by chron method, the PL is drawn through DR lat and observed long. You can see here, this is the DR lat. This one is the observed long. This one is the DR long. So it is where the DR lat intersects the observed long. Through this point, we draw the PL. Direction of the PL is perpendicular to azimuth. So if azimuth is 070 degrees true, we add 90 to it and subtract 90 to get the direction of PL as 160 degrees to 340 degrees true. And this blue line then with single arrow at each end becomes the PL for star X. So any doubt up to here, Beta? Yes, sir. Okay, great. Let's move on to the second example now. Let's look at the next example. Star Y observation gave an intercept of 2 miles towards azimuth 040 degrees true. When intercept is obtained as output of a celestial observation, the observation then has been solved by intercept method. In intercept method, the PL is drawn through ITP. Now in this case, azimuth is 040, intercept is 2 miles towards, DR position is here. So here is what we draw the DR on the chart. Then we draw the azimuth of the body, which in this case is 040 degrees true. Now intercept is 2 miles towards. Towards means from DR towards the body. So from DR we mark off at point 2 miles away on the azimuth line. And this is the ITP. This point is the ITP. Through this point, we draw a PL perpendicular to azimuth. So azimuth was 040. So PL direction becomes 130 to 310. And this segment represented by the black line here, this represents the intercept towards of 2 miles. Okay, so is this intercept plotting also clear, Beta? Yes, sir.
Okay, very good. This was intercept. Let's move on. Now let's have a look at the last example. Star Z observation gave an intercept of 3 miles away. Azimuth 130 degrees true. This is the DR position. Azimuth is 130 degrees true. Now intercept is away from the body. So from DR, it is not towards the body, it is away from the body in the opposite direction. So we extend this azimuth line in the opposite direction. Mark of a point from DR on this line 3 miles off. This point is the ITP. This represents 3 miles of away intercept. Through ITP, we draw the PL perpendicular to azimuth. And if azimuth is 130 degrees true, direction of the PL automatically becomes 040 to 220 degrees true. Okay, so this was intercept away beta. Any doubt up to here? सर ये जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें इनिशियल में सिर्फ डीआर पोजीशन दी हुई है तो बॉडी की तो पता ही नहीं है डायरेक्शन तो फिर हम ये अवे एंड टुवर्ड्स कैसे करेंगे एज दे टोल्ड अस Beta, the yellow highlighted information will also be given to you in the question. So they will tell you what is the intercept, how many miles away, and they will also tell you what is the azimuth. सर दैट्स ओके तो एज्यूमेट से तो डायरेक्टली पीएल आ जाएगा 220 और 040 इंटरसेप्ट इज अवे दैट्स आल्सो ओके डीआर लेट डीआर पोजीशन पर ये बॉडी किस तरफ है दैट हाउ वी विल नो बेटा जो azimuth दिया हुआ है ना 130, this tells us the direction of the body. If the azimuth is 130, that means from the DR position the body is in the 130 direction. Okay sir. Okay, azimuth basically tells us what is the direction in which the body is. Okay sir. Okay, so all clear beta. Any more doubts in this? Very good, that's great. So this basically familiarizes us with the concept of plotting these position lines. Sometimes they are given to us in chart work questions, so don't bother. It is not something which we have to calculate using the celestial navigation formulas. We have to just plot them on the chart like this. So this was all about the position lines. So that completes our PL's concept. So any doubt you have in any of the position lines, you can ask me before we go for a break. सर एक डाउट है सर बोलो बेटा सर इसमें से क्वेश्चन ऐसा ही आता है या फिर समथिंग कुछ ऐड होता है इसमें ओके नाउ बेटा क्वेश्चन में जो ये अभी हमने डिस्कस किया दैट्स ए सेलेस्टियल पीएल इट विल बी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन ये पूरा 25 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा इट विल बी ए स्मॉल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको एक पीएल देंगे उसके साथ और इन्फॉर्मेशन होगी आइदर ए सेकंड पीएल और समथिंग दे विल टेल यू टू फाइंड द पोजीशन और फिर उस पोजीशन से आगे कुछ और करना होगा ओके सर ओके because if this is a complete question that would be too simple so that's basically जी सर वही सोच रहा था 25 मार्क्स का वो कैसे होगा no it's a small part of the question beta okay so theek hai beta we are almost done for our first session so let's go for a break we will meet after tea at around 10:15 and then continue on our next concept of current and wind so see you at 10:15 yes okay okay